रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 57 है टोफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स का। आज हम इसमें हेल्प के को स्टडी करेंगे विद डिटेल्स, हाउ टू यूज़ द वर्ड हेल्प ग्रामेटिकली करेक्टली। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। Help is not actually a causative verb either, but is generally considered with causative verbs in grammar textbook. इससे पहले जैसे हमने let को स्टडी किया था और वो भी चूँकि causative में ही ग्रामर बुक्स में कंसिडर होता है डिस्पाइट कि वो causative verbs नहीं है। इसी तरीके से help भी causative verb in actual नहीं है, but again ये आपको ग्रामर बुक्स में हमेशा causative verb के टॉपिक में मिलेगा. It's usually followed by the simple verb form but can be followed by the infinitive in some cases. इससे पहले जब हमने let में स्टडी किया था which only followed by a simple verb form, however help can be followed by the simple verb form usually, but can also be followed by an infinitive form in some cases, and the verb help means to assist. अब हम इसको further study करते हैं. The sentence structure when you use the word help will be subject followed by help, and then the verb complement comes, which is usually person, then this followed by a verb in the simple form as well as verb in the infinitive form. In rare occasions आपको infinitive form में भी verb मिलेगा. इसको examples में हम study करते हैं. John helped Mary wash the dishes. Now this word help is followed by a simple verb form. इसी तरीके से John helped the old woman with the packages to find a taxi or find a taxi. So whether it's find a taxi, which is a simple verb form, or to find a taxi, which is an infinitive verb form, in both cases it will make sense. इसी तरीके से example 3 आपके पास है. The teacher helped Carolina find the research materials. Again the word find is actually a simple verb form followed by the verb help, which is considered to be a causative verb, which actually is not in real. So this is all about the causative verb. हमने in detail study किया, starting off with have, get, followed by make, let and then help. अब हम इसको एक्सरसाइज के ज़रिए रीइंफोर्स करेंगे इन सब के यूज़ को कॉन्सेप्चुअली. ये 50 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है जिसमें आपको हर ब्लैंक के साथ पैरेंथेसिस में एक वर्ब गिवन है और डिपेंडिंग कि आपके पास कॉजेटिव वर्ब क्या है उसके आप इधर इन्फिनेटिव फॉर्म या आप उसको सिंपल फॉर्म में मेंशन करेंगे. सो जस्ट पॉज योर वीडियो हियर और आप इन 7 ब्लैंक्स को फिल करें. फर्दर मोर देयर 7 मोर क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज. इन सबको भी फिल करें और फिर उसके बाद हम आंसर्स को स्टार्ट करेंगे और जस्ट पॉज योर वीडियो हियर और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें. आई होप यू आर डन विद दिस. सो दोज हु आर डन विद इन एक्सरसाइज बाय नाउ, अब हम आंसर्स को स्टार्ट करते हैं. So the first question was the teacher made John leave the room. So the word made के बाद आपके पास simple verb form है. Second question, the Toshiko had her car repaired by a machine. This is आपके पास the word had है और again इसमें आपके पास चूँकि passive form है तो आपके पास past participle का verb इस्तेमाल हुआ है. Third question आपके पास है Eileen got Marvin to type her paper. Eileen got Marvin, again get के बाद आपके पास infinitive verb form है. I made Jane call her friend on the telephone. I made Jane call her friend on the telephone. Question 5, we got our house painted last week. Again, since it is a passive form, so it's a past participle tense. Question 6, Dr. Byard is having the students write a composition. Write a composition. Question 7, the policeman made the suspect lie on the ground. The policeman made the suspect lie on the ground. Question number 8, Mark got his transcripts sent to the university. Question number 9, Maria is getting her hair cut tomorrow. Question number 10, we will have to get the dean to sign this form. Question 11, the teacher let AI leave the classroom. Question 12, Maria got ED to wash the pipets. Maria got ED to wash the pipets. Question 13, she always has her car fixed by the same mechanic. Question 14, Jean got his book published by a subsidy publisher. Question 15, we have to help Jean find her keys. इसमें अगर आप देखें तो हमने got, help, get इन सब को इस्तेमाल किया है एज कॉजेटिव वर्ब एंड उसके बाद डिसाइड किया है कि हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म होगा वर्ब का या सिंपल वर्ब फॉर्म होगा या पार्टिसिपल फॉर्म होगा व्हेन कम्स टू विद रिगार्ड्स टू अ पैसिव टेंस. आई होप इट ऑल मेक सेंस. इफ इट डिड, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली to get the idea, clarity about the concept of causative verbs. Thanks for watching.